नमस्कार, मेरा नाम चाव सुजाना नामचुम। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत ही पुराना कार्यकर्ता हूं। मैं नामसाई का बासिंदा हूं और इस बार 2024 का असेंबली और लोकसभा चुनाव में 48 लेकांग एसटी असेंबली सीट के लिए मैं पार्टी से भारतीय जनता पार्टी का टिकट के लिए मैं दावेदारी करता हूं और मुझे आशा है पार्टी का श्रेष्ठ नेतृत्व करने वाला हमारे प्रेसिडेंट हो, माननीय सीएम साहब हो, माननीय डिप्टी सीएम साहब हो, माननीय संगठन महामंत्री हो, उनसे मेरा अनुरोध है कि पार्टी का टिकट मुझे प्रदान करे। मैं निश्चित रूप से मैं जीत कर आऊँगा। आप सभी को पता है कि जैसे अभी 2024 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लोकसभा और विधानसभा। इस विधानसभा चुनाव में मैं अपनी तरफ से एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मुझे लगता है कि मैं टिकट का दावेदारी करना चाहिए, क्योंकि पार्टी का भी मैं एक बहुत पुराना कार्यकर्ता हूं। फिलहाल भी जिला अध्यक्ष के नाते मैं पद में हूं और मेरा साथ जितने भी लेकांग के लोग हैं, सीनियर बोलिए, यूथ बोलिए, महिला विंग बोलिए, पार्टी के लीडरगण बोलिए, पंचायत के लीडरगण, उन सभी का भी यही इच्छा है कि एक भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते मुझे पार्टी का टिकट के लिए मांग रखना चाहिए। तो इसीलिए आज आप लोगों के बीच ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है कि आपका माध्यम से मैं अपने पार्टी के नेतृत्व करने वाला हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय सीएम साहब, माननीय डिप्टी सीएम साहब और हमारे पार्टी के संगठन महामंत्री श्री अनंत नारायण मिश्रा जी, उन सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं एक पार्टी का सीनियर कार्यकर्ता होने के नाते मुझे पार्टी का टिकट प्रदान करें और आने वाले समय में लेकांग की उन्नति के लिए, डेवलपमेंट के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए, यूनिटी के लिए हम सभी जितना लेकांग वासी के साथ मिलकर काम करेंगे। और मुझे अटल विश्वास है कि हमारे लेकांग वासी मुझे आशीर्वाद करेंगे, मेरा साथ देंगे, मेरा सहयोग करेंगे और हमारे जो पार्टी का चिन्ह उसको पुनः एक बार जिता करके लाएंगे 2024 में। সকলোকে নমস্কাৰ। আমাৰ মিডিয়া বন্ধুসকল আৰু ইয়াত উপস্থিত আমাৰ মোৰ লগত লেকাংবাসীৰ সকলো নেতাজন, সিনিয়ৰ কওক, মহিলা কওক, ইউথ কওক, পাৰ্টি লিডাৰ কওক, পঞ্চায়তৰ লিডাৰ কওক, সকলোকে মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ। তাৰ উপৰিঞ্চি আমাৰ লেকাংবাসী ৰাইজ যিমান আমাৰ 7টা জনগোষ্ঠী আছে সকলো ৰাইজক মই নমস্কাৰ কৰি মই আজি মিডিয়াৰ ওচৰত সাক্ষাৎ দিবলৈ উপস্থিত হৈছোঁ। মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ এটা পুৰণা कार्यकर्ता হয় আৰু সিনিয়ৰ कार्यकर्ताৰ ৰূপত মই নিজকে আজি খুব এটা ভাগ্যৱান ভাবিছোঁ যে মই টিকেটৰ দাবীদাৰী কৰিম, কিয়নো লেকাঙৰ সকলো ৰাইজৰ লগত আলোচনা কৰাৰ পিছত তেখেতসকলৰো ইচ্ছা আছে আৰু ময়ো ভাবোঁ যে এটা পাৰ্টিত মই ইমান বছৰ 15-16 বছৰ দিন কাম কৰাৰ পিছত পাৰ্টিত যোগদান দি আছোঁ, দলৰ প্ৰত্যেকটা হেৰিত মই নেতৃত্ব দি আছোঁ। গতিকে এইবাৰ 2024 চনৰ যিটো বিধানসভা ইলেকশ্যন আছে ইয়াত মই 48 লেকাং এছটি এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেঞ্চি কাৰণে টিকেটৰ দাবীদাৰী মই ৰাখিছোঁ। আমাৰ পাৰ্টিৰ নেতৃত্ব দিয়া ষ্টেট প্ৰেছিডেণ্ট আমাৰ আদৰণীয় চিএম সাহেব, মাননীয় ডিপুটি চিএম সাহেব আৰু আমাৰ সংগঠন মহামন্ত্ৰী অনন্ত নাৰায়ণ মিশ্ৰাজী, তেখেতসকলক মই জনাই দিব খুজিছোঁ যে মই 48 লেকাঙৰ সৈতে মই মোৰ ফালৰ পৰা মই পাৰ্টিৰ টিকেটৰ দাবীদাৰী কৰিছোঁ। আৰু লেকাংবাসী ৰাইজকো মই ক'ব খুজিছোঁ যে যদিহে পাৰ্টিৰ টিকেট মোক দিয়ে, মই আপোনালোকৰ যেহেতু বিশ্বাস মোৰ ওপৰত ৰাখিছে, মই ঠিক তেনেকৈ কাম কৰি যাম, লগে ভাগে কৰি যাম। আপোনালোকৰ সহায় সহযোগ লাগিব, আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ লাগিব জয়যুক্ত হ'বৰ কাৰণে। জিকাৰ পাছতো আমি লগে ভাগে মিলি জুলি যেনেকৈ আমাৰ আগত মাৰ্গদৰ্শকসকল চলাইছিলে ঠিক তেনেকৈ মই আকৌ এবাৰ পুনৰ চলাবলৈ চেষ্টা কৰি যাম। আপোনালোকৰ লগতে থাকিম লেকাংবাসী হৈ পিনি, আপোনালোকৰ সুখত সুখ, দুখত দুখ মই মোৰ ফালৰ পৰা মই কথা দিছোঁ। আৰু আজি এই ঘোষণাৰ মিডিয়াৰ মাধ্যম দি মই আপোনালোক সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আপোনালোকে সহযোগ কৰক, আশীৰ্বাদ কৰক, আমি নিশ্চয় জয়যুক্ত হ'ম। মোৰ নাম শ্ৰীমতী মেৰিনা ওৰাং, মই মণ্ডলৰ ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট লেকাঙৰ। আজি মই ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ মই শ্ৰী সুজানা নামচুমৰ কাৰণে, যে সুজানা নামচুম বহুত আগৰ পৰা পাৰ্টি কাম কৰি আছে আৰু এতিয়াও এই ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেছিডেণ্ট হৈ আছে। সেইটো কাৰণে আমি তাক এক্টিভলি কাম কৰা দেখি কিনে মই আৰু মোৰ 6টা জাতিৰ সকলো ৰাইজ হৈ কিনে সুজানা নামচুমক সাপোৰ্ট কৰিছোঁ। আৰু মই
অনারেবল CM ছাৰ আৰু DCM ছাৰ আৰু পাৰ্টি প্ৰেচিডেণ্টক অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ সুজনা নামচুম ছাৰক টিকেটটো দিব লাগে বুলি কিনি। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मैं लेकांग का निवासी हूं और मैं एक बीजेपी कार्यकर्ता के नाते हमारे जिला अध्यक्ष चाउ सुजना नामचुम जी ने जो टिकट के दावेदार किए हैं, तो उसमें हम सभी लेकांग वासी और लेकांग के जितने हम लोग बीजेपी कार्यकर्ता हैं, सभी वर्ग से हम चाउ सुजना नामचुम जी को सपोर्ट करते हैं। टिकट दावेदार सच में वो इतने दिन से पुराना कार्यकर्ता है, इसलिए वो दावेदार के हकदार है। तो मैं सभी हाईकमान जो हमारे बीजेपी के अध्यक्षगण हैं, बीजेपी के जितना कार्यकर्ता हैं, सभी को मैं अनुरोध करना चाहूंगा लेकांग वासी की ओर से कि उनको टिकट प्रदान करें। और टिकट अगर प्रदान करते हैं तो हम पूरे लेकांग वासी की ओर से जितने हम 7 जनजातियां हैं उसमें, तो 7 जनजातियां की ओर से हम लोग पूरे बीजेपी पार्टी को बड़ी बहुमत से आगे लेके आएंगे। আমি এইবাৰ সদৌ লেকাঙৰ আমাৰ পাৰ্টি কৰ্মকৰ্তা হৈ আমি আলাপ আলোচনা কৰি আমাৰ নামচাই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ অধ্যক্ষ আমাৰ সুজনা নামচুম তেখেতক আমি আহিবলগীয়া এছেম্বলি কাৰণে টিকেটটো আমি সকলো ৰাইজৰ হৈ আমি তেখেতৰ কাৰণে দাবী কৰিছোঁ আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ তেখেতৰ আজি দীৰ্ঘদিনীয়া কাৰ্যকালত তেখেতৰ কৰ্মদক্ষতা আমি দেখিছোঁ। গতিকে আমি লেকাঙৰ ৰাইজে তেখেতৰ নিচিনা এজন পালে আমি হয়তো আমি একেলগে লেকাংখন উন্নতি হকে আমি লৈ যাব পাৰিম বুলি আশা ৰাখিছোঁ। গতিকে মই লেকাঙৰ এজন সিনিয়ৰ সিটিজেন বা সিনিয়ৰ কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে বিজেপি কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে মই আমাৰ ওপৰলা যিসকল টিকেট ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰা বিষয়ববীয়াসকল আছে তেওঁলোকৰ ওচৰত মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, গতিকে আহিবলগীয়া দিনত সুজনা নামচুমক টিকেটটো দি আৰু আমাৰ লেকাঙৰ বিজেপি পাৰ্টিটোক মজবুত কৰাই কাম কৰাই আগবঢ়াই লৈ যাব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। ধন্যবাদ। সুজনা নামচুম এটা কামিয়াৰ ল'ৰা হয়, তাক আমি সদৌ লেকাং ৰাইজে ছাপোৰ্ট কৰিছোঁ আৰু বিশেষকৈ অহা দিনতো তেনেকুৱা সুজনা নামচুমে আমাৰ কাৰণে কাম কৰিব লেকাঙৰ কাৰণে যেনেকৈ আগৰ পৰা কৰি আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেচিডেণ্ট হৈ পিনে আমি এইটোকে আশা কৰিছোঁ লেকাংবাসী হৈ পিনে। मैं 1 लोअर लेकांग ZPM श्री विजय बल्लभ नियुक्त सपोर्ट करने आए हैं। मैं हाईकमान सभी हाईकमान से रिक्वेस्ट करता हूँ ऑनरेबल स्टेट प्रेसिडेंट श्री वारी मोगे जी, ऑनरेबल CM श्री पेमा खांडू जी, ऑनरेबल डिप्टी CM श्री चौनामेन जी और संगठन मंत्री श्री अनंत नारायण मिश्रा जी, सभी को मैं 1 लोअर लेकांग ZPM का तरफ से चाउ सुजना नामचुम को बीजेपी का टिकट प्रदान करने के लिए अनुरोध करता हूं। धन्यवाद।